This is a momentous occasion for the whole country when we are celebrating 75 years of a journey as a constitutional republic. Speaker, sir, if you look at our immediate neighborhood and contrast it to our experience, we are the only thriving constitutional democracy in our immediate neighborhood. This is the strength of this country and the testament to not only the strength of our constitution, the sublime constitution that our constituent makers gave us, but it is also a testament to the strength of this civilization, this culture that has always placed the values of democracy, the values of freedom of expression, and dharma as the foundation stone of this civilization. Baba Saheb Ambedkar, who played the pivotal role in drafting of this constitution, also acknowledged and appreciated the value of this civilizational culture in democracy and strengthening the democracy in this country. I would only want to take 2 lines from his very interesting quote. Baba Saheb Ambedkar expounds on how the Upanishadic principles of Aham Brahmasmi and Tattvamasi form the foundation, the theoretical foundation, the philosophical foundation of democracy. He says, if all persons are parts of Brahma, then all are equal and all must enjoy the same liberty, which is what democracy means. Looked at from this point of view, there cannot be a slightest doubt that no doctrine could furnish a stronger foundation for democracy than the doctrine of Brahma. He also further goes and says, when Western students of democracy have spread the belief that democracy has stemmed either from Christianity or from Plato, and that there is no other source of inspiration for democracy. If they had known that India too had developed the doctrine of Brahmism, which furnishes a better foundation for democracy, they would not have been so dogmatic. India too must be admitted to have made towards a contribution towards a theoretical foundation for democracy. This is what Baba Saheb Ambedkar says. It was on this very philosophy that Prime Minister Narendra Modi has declared to the world that India is the mother of democracy. That is the strength of, from where we derive that's the philosophical foundation from where we derive the strength for our constitution. Speaker, sir, this civilizational value of India, that we are a civilizational state, was implicitly addressed and appreciated in this constitution when India was referred to as Bharat in Article 1 of the Constitution. Our constituent makers appreciated the millennia-old civilizational history and considered India to be a sacred geography. The Vishnu Purana said, Uttaram yat samudrasya himadraischeva dakshinam varsham tad bharatam nama bharati yatra santati. From then, the country was considered a sacred geography. But unfortunately, Speaker, sir, starting from the first Prime Minister in the Congress party, Pandit Nehru, to the communists and the others who followed, India was not considered a sacred geography because they did not have the civilizational worldview that India was a millennia-old state. They approached India as a union of states, more a private jagir, any part of which could be given to anybody at any point in time, ceded, given away, without even at some times following the constitutional process of law. The attack on the constitution by the Congress party started from the very first article, Article 1. I would want to draw the attention of this nation and the House to how a very important, strategically important island in the Pak Strait in the southern part of the country between India and Sri Lanka, the island called Kachativu, was given away to Sri Lanka by the Congress party and the DMK in 1974 without following any due process envisioned in the constitution. Speaker, sir, when Pandit Nehru was asked about this very important island called Kachativu, which falls in the Pak Strait, which was part of the then Madras presidency, belonging to Raja of Ramna, Pandit Nehru says, I attach no importance at all to this little island, and I would have no hesitation in giving up our claim to it. This was Pandit Nehru's position on a very important island. And सुनना पड़ेगा गौरव भाई, सुनना पड़ेगा, आपके पीछे आपके हिस्टोरिकल पाप को आप सुनना पड़ेगा. Sir, the DMK
which today is lecturing us, the DMK, which is today lecturing us on secularism and the constitutional morality, this party also joined hands. Karunanidhi, who was then the chief minister in 1974, was well made aware that this was the solution and this island would be given away. They also supported this. And in 1974, without bringing an amendment to the constitution, because Article 1 and Article 3 of the constitution mandates that if there is any change in the territory of India, that has to be brought before the parliament. Nothing was done. Parliament was not taken into confidence. Article 1, Article 3 was not amended. Nothing was done. By a mere executive action, a very important island belonging to India was given away for political reasons by the Congress party. Sir, this was not the first instance. Lot was spoken about the basic structure of the constitution. Parliamentary sovereignty and sovereignty of India is one of the founding principles of the nation. But the Congress party, not just in the instance of Kachativu, but even in the instance of Aksai Chin with respect to China, and more recently it was learned that the UPA government was ready to even give away Siachen to Pakistan. This is their commitment to territorial integrity of this country. This is the difference between one view which considers India to be a civilizational state, a sacred geography, and between one whose leader of opposition, even when he goes abroad, says India is not a nation but is a union of states. Contrast this view to what Atal Bihari Vajpayee's position was. ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है. This is the difference between the BJP, which is the protector of the constitution, protector of our territorial integrity, and other political parties like the Congress, which considers India not as a civilizational state, not as a nation, but as a mere hodgepodge union of states. This is an attack on the constitution, Adhyakshi. Adhyakshi, it is this difference in the philosophy of approaching the nation and the constitution that resulted in the Congress party and its successive dynastic prime ministers attacking not just the constitution, but the very soul of this country. The forcible insertion of socialist and secular in the Indian constitution during the 42nd amendment was not the first attempt at introducing these two ideas in the constitution and making the constitution rigid. Even during the Constituent Assembly debates, a proposal was made to add socialist and secular into the country's preamble and the constitution. And this was categorically rejected by Baba Saheb Ambedkar. And the reason why Baba Saheb Ambedkar rejected this is very telling. Baba Saheb Ambedkar, while rejecting the proposal to add socialist and secular, makes this very important observation. He says the constitution is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the state. It is not a mechanism whereby particular members or particular parties are installed in office. What should be the policy of the state, how the society should be organized in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. Sir, yesterday, many members from the opposition said that the Congress party introduced 42nd Amendment, socialism, secularism in the constitution with a laudable objective. Let me tell this nation and let me tell this august house that there was no laudable objective behind that insertion. The only objective was to create a monopoly in politics, monopoly for the dynasty in politics, and monopoly in the economy, so that there will be no challenge to the Congress party's first family. This is exactly what Baba Saheb Ambedkar wanted to oppose. The idea was that by bringing socialism, by saying that there is going to be only one type of form of government, only one type of party, all type of competition was killed in the politics. Dynasty rule was perpetuated. And the idea was that politics would be controlled by the dynasty's monopoly, and the economy in turn would be controlled by the state's monopoly. This vicious cycle, Speaker sir, kept the country poor, kept the country hungry, and kept the country backward. The cost for this thrusting of socialism
only to keep the country poor and to perpetuate the dynasty's stranglehold on the country's politics, cost the nation dear. In a paper titled The Price of Socialism, noted economist Swaminathan Iyer says that millions of children, let me read it out, Speaker, sir, that 14.5 million children would have survived, 261 million more Indians would have become literate, and 109 million more people would have risen from poverty line had we not approached our economy with this dogmatic approach. This, Speaker, sir, has been the contribution of the Congress party. Yesterday, there was a question of Arthik Nyay. I want to tell you what Arthik Nyay the country saw under, economic justice the Congress saw under, the country saw under the Congress party. Until Prime Minister Narendra Modi came, a large swaths of this country, a large population of this country did not have access to toilets. This was the kind of economic justice they had given. Close to 80% of the country's villages did not have access to electricity, and they speak of economic justice. Close to 50 crore people in this country did not have access to bank accounts, and they speak of economic justice. मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद पहली बार देश के गरीब को आर्थिक न्याय मिला है और संवैधानिक रूप से वो मिला। अध्यक्ष जी, because Baba Saheb Ambedkar was such a staunch opponent of this Congress style of politics, Pandit Nehru declared Baba Saheb Ambedkar to be his enemy number one politically. And today, Speaker, sir, I heard my opponents from the Communist Party. State that the RSS was against the Ambedkar and Ambedkar's constitution. There cannot be anything farther from truth than that assertion. Sir, not once but two times, Baba Saheb Ambedkar's electoral chances was thwarted by the Congress and the Communists working together. And Savitri Ambedkar, in her book, Reminiscences of My Life with Ambedkar, notes that S.A. Dange, upon the instructions of Pandit Nehru, worked overtime to defeat Ambedkar in both the by-elections. Make it brief. Speaker, sir, I want to remind the nation that when Congress and the Communists were trying to defeat Ambedkar, when the Communist leader S.A. Dange gave the slogan, "Let your vote go waste, but do not make Ambedkar win," it was an RSS Pracharak Dattopan Thengdi who was working to make Ambedkar win in the election as his election agent. These historical truths have to be brought in. Speaker, sir, for a very long time, a big hypocritical drama has been conducted in this country, where those who are the attackers of the Constitution have posed themselves as the champion of the Constitution. And this hypocrisy must be exposed, Speaker, sir. For a very long time, this hypocrisy has continued. But those who have perpetrated innumerous attacks on the Constitution, destroy the very soul of the Constitution, these people today are posing as the champions, as the protectors of the Constitution. Speaker, sir, the very first attack. Speaker, sir, in a few minutes I will conclude, but this hypocrisy must be exposed. Speaker, sir, the DMK gave us big lectures here on secularism. Their leaders speak of eradicating Sanatana Dharma, and we should listen to these speeches of secularism from them. The DMK leaders, the leaders from the DMK, Speaker, sir, are speaking about constitutional morality. On 26 November 1957, their fountainhead of inspiration, Periyar, burnt the Constitution, and 200 of those followers were arrested. And from these people, we have to learn lessons of constitutional history and morality. Speaker, sir, the very first attack on the Constitution was made by Pandit Nehru when he curtailed the freedom of expression of people. Very first attack. And who was protecting the Constitution? Then it was Shama Prasad Mukherjee. Speaker, sir, imposing emergency, suspending fundamental rights, arresting 1 lakh opposition leaders, forcible sterilization of 1 million people, imposing emergency. Speaker, sir, this is the legacy. This is what is attacking the Constitution.
Despite being banned, the RSS and the Jansangh fought to restore democracy in this country. This is protecting the constitution. Speaker, sir, Article 356 is misused more than 90 times. Democratically elected governments were removed at the whim of the leaders. This is attacking the constitution. Sabka Saath Sabka Vikas, a Team India approach, GST Council. This is Narendra Modi's style of protecting the constitution. Speaker, sir, rejecting the Speaker, sir, just 3 minutes. Speaker, sir. I'm concluding in 3 minutes. Rejecting the Kaka Kadelkar committee report with Nehru himself opposing reservations of backward classes is attack on the constitution. Granting constitutional status to the National Commission of Backward Classes is protection of the constitution. Opposing Mandal reservation. Well, Rajiv Gandhi made his longest speech. That is attacking the constitution while introducing OBC reservations in NEET exam, Navodaya Vidyalaya, implementing EWS reservation is the protection of the constitution. Speaker sir, 2 minutes, please. Speaker sir, एक तो important विषय है, 2 minutes. Speaker sir, perpetuating dynasty politics is an attack on the constitution, while the Prime Minister's vision of bringing 1 lakh new youth into politics is protection of the constitution. Thank you very much. Speaker sir, the Congress introduced the Waqf Act. You are the Speaker sir, you are the chairman of the Waqf JPC. You must give me a minute on this. Speaker sir, आप JPC के chairman हैं, Speaker sir. Speaker sir, lot was spoken about secularism. What was the pervert brand of secularism that the Congress party thrusted on this country? A Muslim could be Muslim, a Christian could be Christian, but a Hindu had to be secular. Yes. This was the kind of one-way secularism that the Congress party introduced. Speaker sir, in Karnataka, the place called Anubhava Mantapa, which is Speaker sir, Anubhava Mantapa, the place of Basavanna, where Basavanna showed the principles of democracy, the philosophy of democracy, that is under Waqf occupation today because of the Congress party enabling legislation. Speaker sir, I only want to conclude by saying this. Speaker, माननीय सभापति जी, संविधान पर चर्चा पर बोलने के लिए मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ मजलूमों की आवाज बन करके खड़ा हूँ। उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ। सर, मैं अब ये आवाज आप 1 मिनट लीजिए, कंक्लूड करने के लिए। माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। We have fought to restore democracy when you imposed emergency. We fought to send Ambedkar to parliament when you conspired to defeat him. We have fought to protect secularism and pluralism when you surrendered to vote bank politics. We fought to make India prosperous while you kept India poor. We fought for Ek Bharat Shresth Bharat while you supported Tukde of Bharat. We are the party that is standing against your Soros army that is trying to destabilize India. We are committed to protecting the constitution. बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं आज यहाँ मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा हूँ। उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ जो इस देश का अटूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारे की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना, ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही। एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं, बल्कि हम वतनों के लिए जिनका जमीर मर गया है उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आजादी, हमारी देश की सभापति जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने शहीद हुए थे। माननीय सभापति जी, कंक्लूड कर रहा हूँ सिर्फ राजकुमार से आप कंक्लूड करें ना, आप कंक्लूड करिए। शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं एक मुस्लिम और अल्पसंख्यक रहनुमा के तौर पर मैं अपनी बिरादरी के लिए खास हक के मुताबिक नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आईना के बाद संविधान के मुताबिक हर नागरिक के लिए जो वादा किया गया उसे पूरा हो, हुकूमत से कमजोर की हिफाजत को यकीनी बनाए और नफरत फैलाने वालों को सजा दे। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं, जो कि हबीब जालिब का शेर है। ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूं कैदो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। श्री राजकुमार संगवान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज हमारे संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सदन में हो रही चर्चा में शामिल होकर अपने विचार सदन के साथ साझा कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 26 नवंबर 1949 की तिथि भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस पावन दिवस को ही हमारे मूर्धन विद्वानों और पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से
आम सहमति से दुनिया का श्रेष्ठतम संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। महोदय, मैं सदन का ध्यान हमारे संविधान की प्रस्तावना की ओर आकर्षण करना चाहता हूं, जिसका आरंभ हम भारत के लोग जैसे सर्व समावेशी शब्दों के साथ होता है। ये शब्द भारत के लोगों को भारत देश का भाग्य निर्माता मानते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत के लोगों की आकांक्षा और मंशा के अनुरूप भारत को एक सफल जनतंत्र एवं गणतंत्र बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। महोदय, हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह भारत के लोगों की पवित्र इच्छाओं आकांक्षाओं का जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। अपने 75 वर्ष के सफर में भारतीय संविधान ने संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उदात्त मूल्यों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की रक्षा तथा स्थापना में बहुत से कालजयी कार्य किए। हमारा संविधान देश के सभी वर्गों, महिलाओं, किसानों, वंचितों, दलितों एवं पिछड़ों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता हुआ हमारे लिए पथ प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप भारत के लोगों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए कार्य करने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। मैं यहाँ भारत रत्न किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून बनाया गया तथा सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। इस कानून ने लाखों किसानों एवं मजदूर वर्ग को सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र में न्याय उपलब्ध कराया तथा देश के समक्ष एक नजीर प्रस्तुत की। इसी क्रम में मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की स्थापना में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और दिव्यांगजनों इत्यादि के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। महोदय, मैं इसी के साथ एक बात जरूर साझा करना चाहूंगा। सदन में संविधान की पुस्तक लेकर आने वाले सम्मानित सदस्य जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, मुझे अपने जीवन की एक घटना मुझे याद है। सन 1975-76 में मैं 10वीं कक्षा का छात्र था। मेरी कक्षा के एक साथी की साइकिल चोरी हुई। हमने कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया, धरना दिया कि साइकिल बरामद होनी चाहिए। 4 दिन स्कूल बंद रहा। पुलिस मेरे घर गई, एक पीएसए का ट्रक और एक जीप, और मैं छोटा था, 10वीं क्लास का छात्र था। गांव से उठाकर थाने ले आई। मैंने पूछा मुझे क्यों लेकर आए हो? बोले कि इस समय आपातकाल लगा है और धरने, प्रदर्शन और किसी मांग को उठाने की आजादी नहीं है, इसलिए आपको उठाकर ले गए। पूरी रात थाने में रहा। अगले दिन मुझे छोड़ा गया, चेतावनी देकर छोड़ दिया। मैंने पूछा आपातकाल क्यों लगा है? पता चला कि गरीबी और महंगाई, भ्रष्टाचार की मांग को लेकर देश के तमाम लोग सड़कों पर थे और नारे लगाए जा रहे थे। मुझे आज भी याद है। और जब नारे लगाए जा रहे थे उस समय कहा था कांग्रेस सरकार ने कि हम गरीबी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार, महंगाई खत्म करेंगे। वो चरम पर था। देश में भूखमरी, गरीबी, महंगाई वो चरम पर थी और नारे, देश की जनता सड़कों पर वो कह रही थी कि ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। और वही समय था जब देश में इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान लाखों लोग जो बेगुनाह, जो जिनकी शादियां तक नहीं हुई थी, उनको जबरन पकड़कर उनकी नसबंदी करी गई। वो आपातकाल के दौर में इतने जुल्म और जाति उस कांग्रेस सरकार ने की। मैं महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस समय देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा और तमाम नेताओं को जेल भेजा गया और जेल में भी नेताओं के साथ जुल्म और जाति की गई। बहुत से हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मैं इनका उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि जेल में तो चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, आडवाणी जी और चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी जैसे तमाम बड़े नेता, रामविलास पासवान जी, तमाम बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मुझे इसलिए ध्यान है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, मिसा में बंद थे और उस समय आपातकाल में जब उनके ऊपर जुल्म और जाति जेल में की जा रही थी, उनके घर में पुत्री ने जन्म लिया। आज हमारे सदन की सम्मानित सदस्य है, इस सम्मानित सदस्य की मीसा जी, लालू प्रसाद यादव जी ने कि वो आपातकाल याद रहे,
अपनी बेटी का नाम मीशा रखा था, मीशा। आज वो हमारे सदन की सम्मानित सदस्य है, ताकि कांग्रेस के जुल्म और जाति की याद सदन में ताजा बनी रहे। और मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा, समाप्त करें। मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा आदरणीय महोदय, कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो लोकतंत्र सेनानी थे, कांग्रेस का जुल्म जिन्होंने सहा, वो उस समय जेल में रहे। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन, और जो लोकतंत्र सेनानी थे, जब उनका शरीर पूरा हो स्वर्गवास के दौरान उनकी अंतिम यात्रा राज के सम्मान से करने का शासनादेश जारी किया। मुझे नहीं पता आज वे लोग आज उधर क्यों बैठे हमारे सम्मानित सदस्य। जो देश की प्रगति में नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, जो देश के विकास में, जो देश को सशक्त बनाने में जो नरेंद्र मोदी का योगदान है, मैं तो चाहूंगा कि वो सम्मानित सदस्य वो ध्यान रखें, जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ न बैठे। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय उदय जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आपको ध्यान रखना चाहिए। वो आप इधर बैठे जिन्होंने उस समय। श्री तोल तिरवा मावलान जी, श्री तोल तिरुमावलान। மாண்புமிகு அவை தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். அரசமைப்பு சட்டம் ஏற்கப்பட்டு 75 ஆண்டுகளை தொட்டிருக்கிற நிலையில் அதை கொண்டாடும் வகையிலே 2 நாட்களாக இந்த அவை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை போற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் 3 ஆண்டு காலம் அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்து ஒரு புதிய இந்தியாவை, சமத்துவ இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்காக இந்த நாட்டுக்கு ஒரு அருட்கொடையாக வழங்கிய சட்டம்தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம். இது வெறும் சட்டம் மட்டுமல்ல, புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான கோட்பாடும் ஆகும். இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரை அதை விளக்குகிறது. இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையில் நாம் எத்தகைய இந்தியாவை எதிர்காலத்தில் கட்டமைக்கப் போகிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். சோசலிசம், செக்யூலரிசம், புளூரலிசம் மற்றும் பெடரலிசம் என்கிற இந்த 4 கோட்பாடுகளும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளாகும். அவை மட்டுமின்றி நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் ஆகிய 4ம் புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான தூண்களாகும். இவற்றை பாதுகாப்பதுதான் இன்றைய சவாலாக நம் முன்னால் இருக்கிறது. இங்கே உரையாற்றிய மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் பலரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பெருமைகளை பேசுகிற அதே வேளையில் அவரை எதிர்த்தது, அவருக்கு துரோகம் செய்தது நீயா நானா என்கிற வகையில்தான் விவாதங்கள் அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. எந்த அளவுக்கு இந்த 75 ஆண்டு காலத்தில் அரசமைப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறோம், வெற்றிகரமாக அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தி புதிய இந்தியாவை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறோம் என்பது குறித்து உரையாடல்கள் இல்லை என்பது வேதனை அளிக்கிறது. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த அரசமைப்பு சட்டம் ஏற்கப்படுவதற்கு முதல் நாள் 1949 ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 25ஆம் நாள் அரசியல் நிர்ணய சபையில் ஆற்றிய உரை, இறுதி உரை வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 3 ஆண்டு காலம் அரும்பாடுபட்டு உழைத்து உருவாக்கிய அந்த அரசமைப்பு சட்டம் குறித்த கவலையை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். வருகிற 1950 ஜனவரி 26 அன்று இந்த தேசம் ஒரு குடியரசாகிவிடும். அது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த தேசத்தின் எதிர்காலத்தை எண்ணி நான் வேதனைப்படுகிறேன். அரசியல் ஜனநாயகத்தை வென்றெடுத்து விட்டோம், ஆனால் சமூக ஜனநாயகம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. பொருளாதார ஜனநாயகம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. இவற்றையெல்லாம் எப்படி நாம் நடைமுறைப்படுத்த போகிறோம் என்கிற வேதனையை அந்த உரையிலே பதிவு செய்திருக்கிறார். சுதந்திரம் இல்லாமல் சமத்துவம், சகோதரத்துவம் இங்கே நடைமுறைக்கு வராது. சமத்துவம் இல்லாமல் சுதந்திரமும் சகோதரத்துவமும் இங்கே வெற்றிகரமாக இயங்காது. ஆகவே இவை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே பிரித்துவிட முடியாது. சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவமாக ஆகிய 3ஐயும் ஒரே நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்துகிற போதுதான், வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்துகிற போதுதான்
இங்கே சமூக ஜனநாயகத்தை நாம் உருவாக்க முடியும் என்கிற கவலையை பதிவு செய்கிறார். அதற்கு இங்கே தடைகளாக இருப்பவற்றை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். சகோதரத்துவம் இல்லாமல் சமத்துவம் இல்லை. நாம் அனைவரும் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த உடன்பிறப்புகள் என்கிற உணர்வை பெற வேண்டும். இது தேசம் என்கிற ஒற்றை வடிவத்தை இன்னும் பெறவில்லை. இது தேசமாகவே இல்லை. ஆகவே நாம் அனைவரும் ஒரு தேசிய இனம் என்று கூட சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட நிலையிலே சமூக ஜனநாயகத்தை வென்றெடுப்பதற்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பல்வேறு யோசனைகளை சொன்ன அதே வேளையில் தன்னுடைய ஆழ்ந்த வருத்தத்தை பதிவு செய்ததை இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன்.